With love, all kinds of creative action takes place. You see how Raulbai has love for me. And in this place, we all also got new ideas of creating a beautiful thing. And as love will increase, your creativity will develop. So the basis of all creativity of Saraswati is love. If there is no love, there is no creativity. It's even in the deeper sense. You see, people who have created all the scientific things are also out of love for the masses, not for themselves. Nobody has produced anything for themselves. If they make something for themselves, it has to become for universal use, otherwise it has no meaning. Even if you say atom bomb and all these things are created from science, they are also very protective. If they had not created those, people would not have taken out their minds from war. Now nobody can think of having a big war. Of course they are having cold wars, but that also will gradually stop when they will be fed up of it. So all the activity on the right hand side of Saraswati basically has to end up in love, starts with love and ends up in love. Whichever does not end up in love coils up and finishes up. It just disappears. So you can see that even matter which is not used for love just finishes. The basis has to be love. Otherwise all such matter that we create, which has angularity, which is not fitting into the mass media, which is not appealing to the masses. Of course, it takes time. We have seen that it takes time. But it has that tendency always to disappear in the thin air as soon as you find it does not appeal to the masses. Now this love that we talk of, this great love of God we talk of, we know that it for definite through vibrations. People do not have vibrations, but still we can feel the vibrations in a very unconscious way. All the great paintings of the world have vibrations. All the great creative works of the world have vibrations. Only those who have vibrations have been sustained by time. Otherwise all other things are destroyed. There must have been monuments and horrible statues and horrible things that have been created long time back, but were all destroyed by nature and they could not stand the impact of the kala, that is the destructive power of time. So all that is sustaining, all that is nurturing, all that is ennobling comes from this sense of love which is within us, very much developed, but within others also who are not yet realized. Ultimately the whole world has to realize that one has to go to that ultimate love of God, otherwise it has no meaning. Now you have seen in art, people have taken to other methods of appealing to people by using cheap things and very vulgar things, just to make people think that this is art. But this will all disappear. It cannot sustain the impact of the time, as I told you. It cannot, because the time will kill it. All these things have to disappear. And already you can see the result, how things are changing everywhere, even in the West. So there is no need to be so much disappointed with the West and to say that the Western world is a wasteland. It is going to be all right, and it has to be done. Especially it has done a lot of Puja of Saraswati, I should say, in the West. Much more that they have done in India, because they have gone to learning, they have tried to find out so many things. But only thing they forgot, that it is a goddess of learning. Everything comes from the goddess, that's what they've forgotten. And that's why all the problems have been created. If there is no spirit in your learning, if there is no source of the goddess in your learning, then it is absolutely useless. If they had realized that there is the spirit that is working it out, they would not have gone that far. And that's what I was warning the Indians all through, that you are now taking to industrial revolution in a way. And to avoid all the complications of industrial revolution, you must try to
know the spirit. If you do not know the spirit, you will have the same problems as these people have, because they are also human beings, you are also human beings. You will go the same way, at random you will run, and there will be problems, the same problems as the Western people have suffered. Now, Saraswati's blessings are so many that one cannot describe in such a short time. And the Surya has given us so many powers that it is impossible to tell them even in one lecture, even in 10 lectures. But how we go against Surya and how we go against the Saraswati while doing the worship of Saraswati is to be seen very clearly within ourselves. For example, the Western people are very fond of Surya because they have no Surya with them. But they go too far with it, as you know, and create complications within themselves of Surya. But the main thing that one has to achieve through Surya is the light within. Is the light within. And if Surya chakra at the Agya level is occupied by Lord Jesus Christ, then it is even more essential that the purity of life, what we call niti, is the morality of life. The morality itself has become very much sort of an argument in the West. People don't have any sense of absolute morality. On vibrations, of course, you know. But they have gone all against it. Those who are the worshippers of Jesus, those who are the worshippers of the Surya, of the Saraswati, have all gone against the powers of Surya, just disobeying it. Because you cannot be a Surya if you do not have a proper sense of morality and holiness. The Surya itself brings light. You see everything clearly. So many qualities Surya has got. It dries up everything that is wet, dirty, filthy. It dries up all these places which create parasites. But so many parasites are created in the West. Not only parasites, but there are horrible cuts and horrible things which have come into those countries which is supposed to be full of light. And in that darkness they exist. Darkness about their spirit, darkness about their own knowledge, and darkness about love. These three things have taken over in the places where you are supposed to love light. Light doesn't mean what you see with your gross eyes. Light means from within, the light of love. That one should understand. Light of love. And it's so soothing, it's so sweet, it's so beautiful, it's so enamoring, it's so abounding that unless and until you can feel that light within you, that light which is of pure love, of purity, pure relationships, pure understanding, if you can develop that kind of a light within yourself, then the whole thing will be cleansed. Wash me and I shall be whiter than snow. This is what happens to you when you are completely cleansed. The purest form of nature is within us. The purest form of nature is within us. Our chakras are made out of that purest form of nature. We are the only people who are spoiling it by our mental thinking. Again, the same Saraswati's work. We are going against Saraswati itself. Saraswati cleanses all that is impure in nature, while with our brain activity we are spoiling all that. All our brain activity goes against pure intelligence. And that's what one has to understand, that this pure intelligence is not to be soiled by our thinking. Our thinking can make us so bumptious, so ego-oriented, so impure, that we can really eat the poison and say, what's wrong? Just the opposite of Saraswati.
If Saraswati is within us, she gives us Subuddhi, wisdom. And that's why to worship Saraswati, to worship Surya, we must have that clear vision as to what we have to be, what we are doing, what filth we are living in, what our mind is getting into. After all, we are here for emancipation and not for just pampering our ego and living with our filth that is with us. So this light should come within us and we should try to rise above our own mental filth which is being created around us. Apart from that, you have to go higher and understand that there is within us a thing called ego. And this ego is false, absolute false. You do not do anything. Actually, when you turn your eyes here and there, when your attention is here and there, it's nothing but your ego is trying to overpower it. But actually, ego is an absolute falsehood, because there's only one ego, and that is of God Almighty, Mahat Ahankara. There is no really any ego that exists. It's a myth, it's a very big myth. Because if you start thinking, you are doing everything, you are doing this, you are doing that, which you are not doing, then this nonsensical ego comes in and you start working it out. It can project in every direction. When it projects forward, it overpowers others, it tries to dominate others, tries to kill others, becomes cruel. When it moves right side, it becomes supraconcious. It starts seeing things which are absurd, which are foolish, which are stupid. When it moves left side, then it starts seeing things yourself as a big man, as a big Christ, or as a big Devi, or something. They are Adi Gurus and I am very great personality. That's left side. When it moves backwards, that's the dangerous one. When people become gurus, which are ruining other people. When the ego moves backwards, then they become gurus. They themselves have lots of defects in themselves, and they try to pull people into those horrible stuff which is described as absolute narka. That's how is the movement of ego on all the sides. Now, when people try to use their right vishuddhi, that is to talk about themselves, is the worst of all. Whatever type of ego you may have, if you start boasting about it and talking about it, that it encircles, thickens the walls of ego so much that it is impossible to penetrate into that, because that such a person is completely satisfied with himself and he believes that he is true. And once he starts believing into a nonsense like that, is an impossibility. It's an impossibility to penetrate. So when you boast about these things or you talk big, be careful. You see, you know what I am, but how many times do I say I am done? Even if I say once, it makes tremendous vibrations for you. But how many times do I say so? At the most, if you say something, I say to him, yes, but I don't say that. If I say it loudly, I don't know what may happen. The whole thing might be blasted with people. So one has to understand that Mahat Ahankara is the one that acts, that works, that really. Sometimes I shout at you, immediately all the bhoots run away. Just once I shout. Yesterday you saw all the bhoots that were coughing, they all ran. Yesterday just I stopped. So you should understand that now as you are realized souls, you can also do the same. Use your right vishuddhi to shout at yourself. Now will you please stop boasting? Will you stop talking all this nonsense? Will you stop showing off? Then it will. Now this thickening takes place by people who really are active, who want to do something about it. Not that they are not active, they want to do it. But they know only one way is to act through talking. They don't understand that there are inner ways by which you control it much more. Because they don't want to take to that, they take to this talking. And once they take to talking and they talk about it, the whole power flows away. But if they do not talk about it and keep it within themselves, it's all right, you can tell me about your experiences or anything, but if you start telling others,
by talking about it too much, then the powers that you have got will be all disappearing gradually. And you will just come down to absolutely lowest level. So one should not too much talk that I have this power, or I see this, or I do this, which is a very wrong thing. I warn you, don't try to show off. You can talk about my powers, it's all right. But don't try to talk about your powers. When it comes, of course, to talk to somebody who is a negative person, or to tell somebody, then you should say that we, not I, we have, some of us have felt this power within us. We have seen people. It may be you only, but you need not say I have. What you have to say, we. Then you become the Mahatahankar. When you say we, yes, some of us, we do. Like in Gregor's book also, I saw to it that he should not have many I's, but he should have we. We think, we do, we. Means the whole collective being, the whole collective organism, living organism of Sahaja Yogis. So you should say, yes, some of us have got. That means you put yourself down, but put all others above you. Say, yes, some of us have, I know some people have this. That's the way one should do it. Because if you have to overpower your ego, you must allow it to spread into everybody else. That's how you will make it perfectly alright. Make it spread. We all Sahaja Yogis. We all. But that pride is not there. I've seen that pride is not there. Still it is very individualistic. If you start thinking we Sahaja Yogis, then what happens? That you become one person, one organization. But the person will look down upon other people. Will see that this person is low, that person is high, that person is there. But he will not think we, the Sahaja Yogis, how beautiful we are. We, the body of Sahaja Yoga, how beautiful we are. So always think in the words of we. So your ego will become much less, much less, much less. And the same ego which looked so funny and absurd will form tomorrow, the Ekadashi. Today's individual ego will merge into Ekadashi. But we all must remember to say we all the time. This is what is today's day is great day for us to change, because the sun has changed its mood now. Sun is coming this side. So let us welcome the sun coming to the north now, this way. And for Australians to say that though the sun has gone, let us establish the sun, the domain of sun within ourselves. Because sun never disappears from our inside. So that is how we have to take a mood by which we should think of one personality. All of us together. All of us together. And anybody tries to be something separate or different, he'll drop it. I'll drop him. Whatever it will drop it. So you just don't worry. Anybody who tries to be singled out or anything, everybody must do whatever they like to nurture the whole, to help the whole, to emancipate the whole, but not to in any way put anyone down or less. Because this is not the way the Sahaja Yoga is. Sahaja Yoga only works in collectivity. And the one who has developed this permeating spirit is a real Sahaja Yoga. Who has not, is not. Whatever you may think of yourself, I have nothing to say. But this permeating personality, which moves from places to places, whether you talk or not, like your mother is, whether I meet you or not makes no difference, but I am permeating through all of you. By little things also, I am there with you. So like that, try to permeate into each other and see the beauty, and you will enjoy yourself the best, because that is the biggest thing. That's the biggest thing that is to be achieved. Because this ego, makes you like a nutshell, and you just cannot have a rapport with that beauty of permeation. And just see how the notes move into each other. It will be a great idea today. It's a great thing today we have to having Puja and Dhulia. Like the Dhulia means the dust. And one day I had written in childhood a poem, I remember. Very interesting poem it was. I don't know where it's lost, but we said that I want to be like a dust particle, which moves with the wind.
which goes everywhere, can go sit on the head of a king, or can go and fall at the feet of someone. It can go and sit on a little flower, and it can go and sit everywhere. But I want to be a particle of dust that is fragrant, that is nourishing, that is enlightening. Like that, I had written a very beautiful poem. I must have been about 7 years of age, I remember, to be a dust particle. I remember that very clearly, long time back, that I should be a dust particle so that I'll permeate into people, which is a very big thing to become a dust particle of that kind. To that whatever you touch, you see, that becomes a level. Whatever you just feel, that has fragrance. It's such a great thing to be like that. And that was my desire, and it has been achieved. At that young age, I had this idea of becoming a dust particle, and today, just while talking to you, I remembered that I wanted to be that, and that is what this place is. And Raulve is like that. She's a very simple woman, and she lives like a very simple person, but she has a sense of permeation. And now there are so many Sahajogis yesterday who came. I'm sure they'll take it up, Sahajayoga, very well. There are lots of Sahajogis from Dhulia now, and I'm sure there are going to be more people. I hope you have met all of them. Make friends with all of them. Try to know them, who they are. They may not know English, so get somebody to translate. Talk to them and be nice to them. Be friendly with them. I want you to meet them for permeation. You should know who are the people here, who are in Nasi, because somehow we never meet the Sahajogis, you see, who are in that particular place. And when we go back, we have only 1 or 2 addresses. It's not a good idea. Try to see how many people there are. Ask about their questions about them and all that. This permeation is only possible when your ego starts permeating all around. This is the way to overcome the problems of the right side, and that is how to worship Saraswati. Because Saraswati has a veena in her hand, and that veena is the primordial instrument which she plays, like music. And the music penetrates into the heart. You don't know how it goes into you and how it works out. And that's how a person who is a Sahajayogi should permeate like music into everything. She has so many qualities, as I told you, which cannot be described in one lecture. But one of the greatest quality of hers is that she ends up into subtler things. Like the Mother Earth will end up into fragrance. Music will enter into melodies. Like that, whatever she creates ends up into something later. Matter, whatever she produces, ends up into aesthetics. If matter does not have aesthetics, then it is gross. Like that, everything. Now, you will say, what is water? Water becomes the river Ganges. These are the subtler. So, the matter gets into subtler things because it has to permeate. It has to permeate. So, everything, whatever it is, and the best of all is the air. That air becomes the vibrations. So, you can see how whatever has come out from this matter, from these 5 elements, becomes that subtle thing. Of course, the left side and right side both work it out, because the love has to work on this, and when love acts on matter, it becomes. And that is how one has to look at your own lives to make it a beautiful combination of love and matter. May God bless you. आता धुळ्याच्या सहयोगांसाठी असं सांगायचं आहे की आता बरेच लोक काल पार झालेले दिसले, आणखी थोडं सिरियसली पण सहयोगात येत आहेत असं वाटलं. तेव्हा धुळ्याच्या लोकांनी मात्र काळजी घ्यायला पाहिजे. राहुलबाईंनी पुष्कळ मेहनत केलेली आहे. त्यांचं घर इथे आहे, तुम्हाला माहिती आहे. तिथे सगळ्यांनी रविवारी सकाळी अगदी व्यवस्थितपणे ध्यान हे केलं पाहिजे. तसंच घरी रोज बैठक पाहिजे. बैठक जर तुम्ही केली नाही तर सहयोगी जमणार नाही. तुमच्यावर अवलंबून आहे. जितकी तुम्ही बैठक कराल, जितकी तुमच्यामध्ये गहनता येईल, तितका सहयोग वाढणार. जर तुम्ही स्वतः मेहनत नाही केली तर सहयोग वाढणार नाही आणि तुम्हाला सहयोगाचा काही लाभ होणार. म्हणून रोज अगदी
न चुकता सकाळ संध्याकाळ बैठक ही पाहिजे. सकाळी जरी थोडा वेळ असला तरी संध्याकाळी व्यवस्थित आरामात बैठक पाहिजे. हळूहळू तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, तुमच्याजवळ पुष्कळ टाईम वाचू लागेल. कारण बाकीचं तुम्हाला काही आवडणारच नाही. इकडे जायचं तिकडे जायचं, गप्पा मारायच्या, फालतूच्या गोष्टी तुम्हाला काही आवडणार नाही. नको रे ते असून उगीच्या गोष्टी करत राहतात. उलट तुम्हाला वाटते काय बघून राहिलेत सगळे बेकारचे लोक, यांना काही समजत नाही, उगीच आपला कशाला इथे वेळ घालवायचा. तेव्हा तेही सुटू. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला आश्चर्य वाटते की जसे तुम्ही जमू लागला, जसे तुम्ही मुळात जाल. मुळं 2-4च असतात, पण ती जेव्हा खोल जायला लागतात झाड वाढू लागतं. असा सहयोग वाढताना तुम्हाला दिसेल. म्हणून माझा तुमच्यावर अनंत आशीर्वाद आहे. काल मी धुळ्याच्या लोकांना खूप समजावून सांगितलं आहे, पण तुम्ही सगळ्यांनी खूप मेहनत केली पाहिजे, खूप पॉझिटिव्हली राहिलं पाहिजे, म्हणजे कार्य होणार. बरं झालं मंत्र म्हणायचं. या कुठे नागराज झोपला का? उजवीकडनं डावीकडे घाला. उजवीकडनं डावीकडे घाला. उजवीकडनं डावीकडे घाला. तुमच्या धुळ्याच्या लोकांनी माझ्या आधी पाय धुतले नाही, त्यांना बोलून द्या. मी म्हणत होते किती आहे धुळ्याच्या सहयोगी? नवीन एकंदर नाही जुने. समोर येऊन बसा धुळ्याच्या सहयोगाने. लेट देम बी सीटेड इन फ्रंट. या पुढे या. धुळ्याच्या सहयोगाने पुढे यावं. आवडली का तुम्हाला साडी? छान. या छान छान. मोठे आहेत जीव, मोठे आहेत ते. सगळे एकावन्न एक आहे, काय हरकत नाही. 4 जरी असले तरी 4 अगदी वीर असले ते पुष्कळ बरे. 100 नेबराटांपेक्षा 4 वीर पुष्कळ झाले. छान. या आपण येऊन घेतलं काय बसा. सगळेजण बसायचे. तुम्ही हे घ्या मंत्र म्हणा.
This one is like whatever you may do, it comes back to the same. Just yes, very good. Yes. Make it louder. On नाही म्हणे. On नाही म्हणे. On करा तुमचं ते. On आहे? नाही ना? Is it on? On. Om. अहो तुम्ही धुळ्यातलेच आहात ना जयसिंगराव कुठे गेले जयसिंगराव आणि त्यांच्या मिसेस सुनबाई तुम्ही धुळ्यातल्या आहात का कुठल्या या इकडे ओम सत्यन इंद्रो दशवा सत्यन पूषा विश्ववेदा सत्यन शास्त्रो विश्वनेमि सत्यन बृहस्पति करातु ओम शांति 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 ओम श्रीमन्महागणपतये नमः माताजी निर्मला देवी नमो नमः कुलदेवतायै नमः ग्रामदेवतायै नमः वासुदेवताभ्यो नमः वारणैरण्यकराभ्यां नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीवन्दनाभ्यां नमः मातृचरणकमलाभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः निर्विघ्नमस्तु ओम सुमुखदेवेन्द्रस्य वेदनकाः नमोदर श्रीगुरो विघ्ननाशो महादेवा सुंदरके प्रणाते शुभारंभो गजानना वादयैतानि नामानि पड़े नोयावति विद्यारम्भे विवाहे परि निकमेदा संग्रामे संकटे दैव विघ्नतो चरजायते सुभां परधरन्ते उपचक्रान् चतुर्दशं नवरं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषेकान् सिद्ध्यर्थं सुखिभूयस्वरस्वै सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां पूजितो भगवान् मङ्गलायतां हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव सारावनं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवी स्मरामि तावत् तेषां परायः येषामिन्दीवरश्यामो उदयसोमनाथः
नास्तिं ब्रह्मेशानावना विनायकं ब्रह्मं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादु सर्वकार्यार्थसिद्ध्यै संकल्पः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मोपदेशे वेदवाराः कल्पयवस्वतमन्वन्तरे यथाविष्णुसमये सत्ययुगे सत्यप्रथमचरणे युगे सत्ययुग प्रथम चरणे पण ठीक आहे तेच आहे. Now he is declaring it as a Satyayuga. The first beginning of Satyayuga. Good idea. सत्ययुगे सत्यप्रथमचरणे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये गोदावर्याः उत्तरे तीरे शालिवाहनशके पिंजरा नदी तीरे शालिवाहनशके कोणतं शक आहे आता सत्यावतारे सत्यावतारे सहस्रारावले सत्यावतारे अस्मिन् भगवने दुन्दुभिनाम संवत्सरे मार्गशीर्ष मासे संवत्सर कोणचा दुन्दुभि नाम संवत्सर दुन्दुभि is where you have seen that thing which was blowing. I told you that one is to declare war. So Dundubi now. So that is now being declared war. All right. दुन्दुभि नाम संवत्सरे मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्षे आम्हाला शुभ पुण्यतिथौ संक्रांति म्हणजे कोणची संक्रांतीला कोणची असते प्रतिपदा. वा प्रतिपदा इज फर्स्ट डे ऑफ द मून. वा काल अमावस्या होती का बघा 12 वाजता म्हणून सुरू केलं मी. शुभ तिथे शुभ नक्षत्रे शुभ राशीस्थिते चंद्रे शुभ राशीस्थिते सूर्ये शुभ राशीस्थिते देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा राजस्थानस्तेषु सर्वसु एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ममात्मनः कृतिपुराणोक्त सर्वप्राप्तनिसामिरुजारदेव्यै माताजी निर्मला देवी देवता पूजनमहं करिष्ये. कलशपूजनम् कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रस्य महासिताः मूले तत्स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणामृताः कुक्षौतुसागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा रूपे रूपे युगे रत्नाम्बे रत्नकर्णा अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः. अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पूर्ति गैरता आयान्तु देव पूजार्थं दुर्गक्षयकारकाः गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. श्री गणेशाय नमः. ओम वरुणाय नमः. जलदेशेन मुद्रां प्रदर्शय. शङ्खपूजनम् शंखपूजना आता कोण पाडवायला Have you got the shankha? Count. Puja. त्याला प्रॉब्लेम झाला ओम भाषण्याय विद्महे वामनाय तन्नः शंखः प्रचोदयात्. शंखमुद्रां प्रदर्शयामि. शंखमुद्रा बरोबर.
शङ्खमुद्रां प्रदर्शयामि घण्टापूजनम् आगमासन्तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां पूर्वे घण्टारवस्तत् देवतापादलक्षणां घण्टायै नमः घण्टाचतुष्कं समर्पयामि बारीक तेवढं झालं असं सगळं करून टाकलं पुढचं द्या श्रीमन्महागणपतये नमो नमः अभिषेक आता गणपतीचा चाललाच आहे अभिषेक म्हणा ओम नमः श्री गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं नमः श्री त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं खलिलं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्मं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुच्या नमशिष्यम् अवश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवसरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवशोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वभौमां पाहि पाहि समन्दात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नरो निरो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्य दोषि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वरुद्रः त्वमिन्द्रः त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसितं तारेण बुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितास्कन्धे सैषा गणेशविद्या गणपतिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंशदानं तदन्त्य वरदं हस्ते विभ्राणं मूषकद्वयं दत्तं सम्बोधनं शिवको गणकं दत्तवासनं दत्तनन्दां लिप्ताङ्गं दत्तपुष्पैस्तु पूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आदिर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो मातृपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तुभूषा यैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः झाले का सगळं ही राहिलं तर तुम्ही लिहून घ्यायचं आता त्यांचं एकदम हां ही राहिलं त्यांना आतमध्ये सांगा येऊन वाजवायला काय हरकत नाही कारण एवढा जोरात आवाज आहे म्युझिक असलं म्हणजे नेहमी चालतं येत आहेत का या इकडे या कोपऱ्यात जागा आहे खिडकी उघडून घ्या खिडकी उघडून घ्या बसा आरामात जरा ते कोपऱ्यात बसा जस्ट मूव अ लिटिल बिट यस बसा छान वाजव छान वाजव सारंग राग आहे तो गौर सारंग वेळ आहे ना
ओम अचिंत्यलक्षणाव्यक्ता ब्रह्मात्मा महेश्वरी अमृता मध्यस्था वेदिका शास्त्राजिता थोडा हलका वाजा म्हणजे हे ऐकायला आलं पाहिजे. मंत्र ओम अणिमाती गुणाधारा अश्वमंडल संस्थिता अजरा अजा अपरा अधर्मा अक्षसूत्रा अधारा अकारा एक षडानंता शरीर षडवत वर्गभेदिनी अंजनादि प्रतीकाता अंजनादि निवासनी आदित्यच्या जपा विद्या रविंद्र दिवेक्षा अंतर्वैस्थिता विद्या वंशिनी चांद्रात्मिका अजाचार्य मुखावा प्राप्य रविंद्र विद्यवात्मा आत्माता सदाना ज्ञापरिमंडल मध्ये असुरग्नि यमाव्यास्या लक्ष्मी नत्यचातिचा आदिलक्ष्मी आदिशक्ती आदिकृतीच्या यतानना आदित्य पदवीचारा आदित्य परिसेविता आचार्या वसनाचारा व्याधिमती निवासिनी आत्रेयी चामरी चार्या जालाद्या शासनस्थिता आधार निलयाधारा आकाशांत निवासिनी आद्याक्षर समायुक्ता चांद्राकाशभूमिणी आदित्य मंडलगता चांद्रध्वांतनाशिनी इंदिरा चेष्टा चेष्टा चेंदीवर निवेशना निरावती चेन्द्रबला चेन्द्राणी चेन्दूरूपिणी शिवो संयुक्ता केशसन्नानकारिणी इंद्रनील समाकारा वेदा बीजरूपिणी इंद्राक्षी चेश्वरी देवी देहात्रय विवर्तिता उमा जोषा गुरुतिभा गोवा रूपराधना गुरु प्रभा चोरुमती गुरुपा युमद्गला पूर्णोच्चा पूर्वगेशी जाप्युर्भोगतिवेदिनी पूर्ववायु पुण्या चोर्मी माला वाग्दंतकायिनी चर्ची उपवती ऋषिदेव नमस्कृता ऋग्वेदा ऋणहर्ती ऋषिमंडलचारिणी ऋषिदा ऋषिमार्गस्था ऋषिधर्मानुपुत्रता ऋग्वेद जनेयारुद्वी ऋतधर्म फलप्रवर्तिनी ऋतादि फलसम्भूता ऋतादि विषहारिणी एकाक्षरादय कमात्रा जैका जैकेकनिष्ठिता ऐन्द्री जैरावतेनरूढा जैका मुष्टिकर्पदा ओंकारा योगई चोरा श्रोतप्रोत निवासिनी औवा औषध संपन्ना ओवासन फलप्रदा अंड मध्यस्थिता देवी शांकार मनुरूपिणी कात्यायनी कालरात्रि कामाक्षी कामसुंदरी कमला कामिनी कांता कामदा कलकंठिनी दरिकुंभ स्तनभरा दरवी रघुवासिनी कल्याणी कुंडलवती कुरुक्षेत्र निवासिनी गुरुविंद्र सदाकारा कुंडली कुमलालया कालजिह्वा करावाक्षा कालिका कालरूपिणी कमनीय मा कांती कलाधारा कुमलवती कौशिकी कमलाकारा कामचार कलंजिनी कौमारी करुणापांगी भगवंता करिप्रिया केशरी केशवसुता कदम्ब कुसुमप्रिया कालिंदी कालिका कांची तलभोधनपुरुषसंसुता काममाता प्रभुमती कामरूपा प्रभावती कुमारी सुंदरी निलया विराजी विरवाहना कैकेयी कोकिला लापा केतकी कुसुमप्रिया कमंडलुधरा काली कर्म निर्मूलकारिणी जलहंसगति कक्षा कृत कौतुकमंगला कस्तूरी तिलका कमला करेंद्र भवना कर्पूर लेपना कृष्णा कपिला कुहराश्रया कूटस्था कुलरा कमला कुशिस्था तिलस्मिप्रभा खड्गकेतकरा खड्वा इंजरी कदवाहना खड्वांगधारिणी ख्याता खडराजोपरिस्थिता कलग्नि खंडितजरा खंडाख्या प्रदायिनी खंडेनु जनका गंगा गणेश गुरुपूजिता गोप्तायत्री गोमती गीता गांधारी गामदोरूपा गौतमी गामिनी गाना गंधर्वा परसेविका गोविंद जनाकांता गुणत्रय विभाविका गंधर्वी गौरी गोत्रा गिरिशा धनागमी गुहा माता गुणवती गुरुपा गुरुगणाशिनी गुरुवी गुणवती गुह्या गोप्तव्या गुणदायिनी गिरिजा गुह्य मातंगी गरुड़ध्वज वल्लभा
सर्वापहारणी गोदा गोकुल सुखा धरा गोकर्ण निलयासक्ता दुर्य मंडलवर्तिनी धर्मता घनता घंटा घोरता नवमर्दिनी ध्वनि मंत्रमयी घोरा धन संपत्तिदायिनी घंटा सर्वप्रिया ज्ञाना ध्वनि संकटकारिणी धनाय मंडला घोरा घृताची घनवेगिनी ज्ञानधातुमयी चर्चा चर्चिता चारुहासिनी चतुरा चंडिका चित्रा चित्रमात्र विभूषिता चतुर्भुजा चारुधंता चातुरी चित्रकला चूपिका चित्रवस्त्रांगा चंद्रमठ कंठकुंडला मकुंडला चंद्रहासा शारुदा चकोरी चंद्रहासिनी चंद्रिका चंद्रधात्रीश चौरी चौरा चंडिका चंचवाग्वादिनी चंद्रचूड़ा चोरनिवा विनाशिनी चारु चंद्र नरिसांगी चंचमचामरीला चारु मध्या चारुगति चंडिका चंद्रभूमिनी चारु होम प्रिया चावा चरिता चक्रवाहुगा चंद्रमंडल मध्यस्था चंद्रमंडल दर्पणा चक्रवाक सनिचेष्टा चित्रा चारु विलासिनी चित्स्वरूपा चंद्रवती चंद्रमा चंदन प्रिया योदयित्री चिरप्रज्ञा जातका चारुगेशवी छत्रयासा छत्रधरा छाया चंदा परिसरा छाया देवी छिद्रनका चंदे देवी सर्वे छंदो अनुष्टु प्रतिष्ठांता लोकवत् सर्वेदिने चेगा छत्रेश्वरी छिन्ना शुभिका चेतना प्रिया जननी जन्मरहिता जागृता जनन्मयी जाह्नवी जटिला चेत्री जरा मरणवर्तिता जम्बूद्वीपवती ज्वाला जयंती जयशालिनी जम्बूद्वीपवती ज्वाला जयंती जलकायिनी जितेन्द्रिया चितक्रोधा चिता मिश्रा जगत्प्रिया जागरूपमयी जिह्वा जानकी जगती जरा जनित्री चंद्रतनया जगत्त्रयविषयिणी ज्वालामुखी जभवती ज्वरग्नि चिदविष्टमा गीता कांतमयी ज्वाला जागृति ज्वर देवता ज्वलंती ज्वलता चेता जागोषा स्फोटदिमुखी जम्बिनी ब्रह्मणा गंधा जलन्मानिक्य कुंडला जिज्ञना क्षणस्य रोधा जंजा मारुतवेगिनी जलती वाचुक्षला रूपा यमरूपा स्मृता तंकवाला समायुक्ता कंकिनी कंकवेगिनी कंकिना सुराघोषा कंकनीय महोरता कंकारकारिणी देवी सर्व शब्दोन्निरायिनी दामरी डाकिनी बिंबा नंदुमालिक निर्दिका दामरी तंत्रमार्गस्था दमटमुरुनादिनी इंदिरा वसहा बिंबो तथा क्रीडा परायणा दुंडी विघ्नेश जननी दक्का हंसारे देवया नित्य ज्ञाना निरुपमा निर्गुणा नर्मदा नदी त्रिगुणा त्रिपदा तंत्री तुलसी न करुणा करो त्रिविक्रम पदाक्रांता कुरीय पदगामी करुणा नित्य संकाशा तामसी त्रिनाथला त्रिकालज्ञा संपन्ना विपरीत विलोचना त्रिशक्ति त्रिपुरा तुंगा तुरंगोदानला दिवेंगी ललिला तीव्रा चित्तोदा कामकारिणी तंत्रमंत्रो विशेषज्ञा तनुमस्या त्रिविष्टवा श्रीसंध्या चित्तनी तोषा संस्था साधक प्रकामिनी ताटंकिनी तुषारावा तुलिना चलवासिनी तंतुजागर समायुक्ता तारहारावली प्रिया किलो मोक्रिया तीर्था समाधि भगवान की तारका देवता तन्वी शिशंतु परिवारिका भगवतरी किलोबाणा तारका प्रियवादिनी श्रीजटा नित्यरी चूर्णा त्रिना करुणा कुटी सप्तकांचन संकाया सप्तकांचन भूषा त्रयंबका त्रिवर्गाच विकाल ज्ञानदायिनी सर्वना सुविदा सुखा नामसी सुरुवा साक्षात्ता विमुना कारा त्रिभंगी धनुवल्लरी आकारे आरवान कांता रोहिणी दीनवत्सला दानवांका करी दुर्गा दुर्गासन निवर्गिणी देवनित्री दिवारात्रि द्रौपदी दुर्मुदित्वा देवयानी दुरावासा दारिद्र्य वेहिनी दिवा दामोदर प्रियातीता दिवासा दिग्मोहिनी दिग्मोहिनी दंडकारण्य निलया दंडी देवपूजिका देववन्द्याती विषद्वा देहिनी दानवाकृति दीनानाथस्तादीशा दैवदारी स्वरूपिणी धात्री धनुधराने धारणी धर्मचारिणी जुवन्नरा दातारा धनदा धान्यदोहिनी
धर्मशीला नाम त्याच्या धर्मवेद विशाला ज्योतिर्धन्या ऋतुपदा धर्मराज प्रिया दुआ उमावती गोमकेशी धर्मशास्त्र प्रकाशिनी नंदा नंद प्रिया नीला नमृता नंदनात्मिका नर्मदा नलिनी नीला नीलकंठ समाश्रया नारायण प्रिया नित्या निर्मला निर्मला निधि निराकारा निरुपमा नित्य शुद्धा निरंजना नर्मदा नलिनी नीला नीलकंठ समाश्रया नारायण प्रिया नित्या निर्मला निर्मला निधि निराकारा निरुपमा नित्य शुद्धा निरंजना नाद बिंदु कलातीता नाद बिंदु कलात्मिका मुसंगिनी नगरा निर्मनाग विभूषिता नरकत्यै शमनी नारायण भगवद्भवा निरवध्या निराकार नारद प्रियकारिणी नाना ज्योति समाख्याता निजिदा निर्मलात्मिका नवसूत्रजनादीति निर्मद्रवकारिणी नंदजा नवरत्नाख्या नंदिता धन्यवादिनी नवनीतप्रिया नारी नीलजी मुदलिस्मना निमेषिनी नदी रूपा नीलजीवा निमेश्वरी नामावली विसंपन्नी नागरूपनिवासिनी नवजान दत्तप्रिया नागरूपादि देवता नुपुरा क्रांतचरणा नरचित्र प्रमोदिनी निमग्ना रक्तनयना निर्घात समनिस्मना नंदनो ज्ञानो निलया निर्विहो परिचारिणी पार्वती परमोदारा परब्रह्मात्मिका परा पंचकोश विनिर्मुक्ता पंचपद्मातकनाशिनी परचित्त विधानज्ञा पंचिका पंचरूपिणी पूर्णिमा परमाप्रीति परतेज प्रकाशिनी पुराणी पौरुषी पुण्या पुंडरीक निवेशना पाताल निर्मलना प्रीता प्रीतिशूरधनी पावनी पादसहिता पीठदा भवनादिनी प्रजापतिर परिष्कांता पर्वतनमंडला पद्मप्रिया पद्मनौका पद्माक्षी पद्मसंभवा पद्मपत्रा पद्मोदरा पद्मिनी केवासिनी पशुभाषा विनिर्मुक्ता पुरंदी पुरवासिनी पुष्करा पुष्णा पर्वत पारिजात समप्रिया पतिव्रता पवित्रांगी पुष्पहास पाया प्रज्ञावती सुता पौत्री पुण्यपूता वयस्विनी पट्टिभाषा धरापंथी विदुरूपदायिनी पुराणी पुण्यशीलाज प्रणतासी विनाशिनी प्रद्युम्न जननी पुष्टा पितामह परिग्रहा पुंडरीक पुरावासा पुंडरीक समागमना पुष्पमुजंगा पुरुजा पुष्पाला पुरुगरी प्रवाल शोभा पिंगाक्षी प्रद्युम्न जननी पुष्टा पितामह परिग्रहा पुंडरीक पुरावासा पुंडरीक समागमना पुंडरीक पुरावासा पुंडरीक समागमना पुरुजंगा पुरुजा पुरुमारा पुरुगरी प्रवाल शोभा पिंगाक्षी नीलवासा सकापरा प्रसवा पुष्टिला पुण्या प्रतिष्ठा प्रणवा गति पंचवर्णा पंचवाणी पंचिका पंचरस्थिरा परमाया परज्योति पंचरस्थिता परमाया परज्योति परप्रीति परागति पराकाशा परेशानी पाविनी पावकशुद्धि पुण्यपदा परिच्छेद्या पुष्पहासा पुरुधरा ईशानी पीतवसना पीतशय्याग्राणी पीतक्रिया चाचक्री पाटनासी पटक्रिया पंचपक्षप्रिया पूतना प्राणकारिणी पुन्नाग वनमध्यस्था पुण्यनिर्दोषेविका पंचांगी चपराशक्ति परमात्माधारिणी पुष्पकांडस्था पूषा पोषिता चिदमिश्रमा पानप्रिया पंचशिखा पन्नवो पुरुषायिनी पंचमात्रात्मिका पुत्री पतिका पुरुषोहिनी पुराण न्याय मीमांसा पाटली पुष्पगंधिनी पुण्य प्रजा पारदात्री परमार्थे गोचरा प्रवाह शोभा पूर्णाचा प्रणवा पंचभूतै शरीरी कलका बंधु पुष्कराली कलका कृती शरीरलो भोगसेना मणिमंडल वंदिता बाला भोमका बाला कमलिनिवांशुका बलभद्रप्रिया वंद्या बलवा बुद्धि संस्थिता बंदी देवी वीरवती बलिगंधी बलिप्रिया मांडवी बोधिका बुद्धि बंधक कुसुमप्रिया बालभानु प्रभाकारा
ब्राह्मी ब्राह्मण देवता बृहस्पति सुता वृंदावन विहारी वानागिनी विलाहारा विलवासा बहुदता बहुनेत्रा बहुपदा बहुकर्णावसंस्थिता बहुबाहुता बीजरूपिणी बहुरूपिणी बिंदुनाद कलातीता बिंदुनाद स्वरूपिणी बुद्धिगोदांग बुद्धिस्नान वरया क्षमवासिनी वृंदारका बृहस्कंदा गुरुदी बाणवासिनी वृंदाध्यक्षा बहुमुखा वनिता बहुविक्रमा भद्रपद्मा नमस्तीना विलोकद्रोसदर्शिता पूर्णिद्रुमयामाता बलिष्ठा बिंदुकर्मणा बाणा बाणासनवती बड़वा नलवेगी ब्रह्माण्डकंत्वैरन्वस्ता ब्रह्मकंचनसूत्रे भवानी भीषणवती भाविनी भयहारिणी भद्रकाली भुजंगाक्षी भारती भारताशया भैरवी भीषणाकारा भूमिदा भूतिमालिनी भामिनी भोगनिरता भद्रदा भूरिविक्रमा भूतवासा भूलता भागवी भूतराजिता भागीरथी भोगवती भवनस्था विजयपरा भामिनी भोगिनी भाषा भवानी भूरिदक्षिणा भद्रामिका भीमवती भवबंध विमोचिनी भजनीया भूतदात्री गर्जिता भुवनेश्वरी भुजंग वलया भीमा बेरुंडा भागदेयिनी माता माया मधुमती मधुकृपा मधुप्रिया महादेवी महाबाला मालिनी मीनलोचना माया सीता मधुमती मधुमता मधुद्रवा मानवी मधुसंभूता निखिला पुरवासिनी मधुकैटवसंहंत्री मेदिनी विजयारिणी मंदोदरी महामाया मैथिली मंगलप्रिया महालक्ष्मी महाकाली मानवी मधुसंभूता मिथिला पुरवासिनी मधुकैटवसंहंत्री मेदिनी मेघशालिनी मंदोदरी महामाया मैथिली मंगलप्रिया महालक्ष्मी महाकाली महाकन्या महेश्वरी महेंद्री मेरुकलया मंदार कुमारिका मंजु मंजीर जना मोगला मंजुवाणी मधुर श्रावणी मुद्रा मलया मलयांगिता मेधा मरकश्यामा मागधी मेघाप्रिया महामारी महावीरा महाश्यामा मनुष्का मातृका मेघावंता मुमंद फलविक्रमा मूलाधार सीता मुद्रा मणिपूर सुवासिनी मूलाधार सीता मुद्रा मणिपूर सुवासिनी योगाक्षी महिषारूढ़ा महिषासुरमर्दिनी योगासना योगगम्या योगा योगुणस्काश्रया यौवनी युद्धमध्यस्था यमुना युगधारिणी यक्षिणी योगमुद्रा च यक्षराज वसूजिनी यात्रायां विलासज्ञा यदों दुर्समुद्भवा यकारादिकारान्ता याविषी यज्ञरूपिणी यामिनी योगनिरता यादुरामभयङ्करी रुक्मिणी रमणी रामा देवकी विमुक्ताति गौरी लौकियाकारा राममाता विप्रिया रोहिणी राज्यदा रेवा रमा राजीवलोचना राकेशी रूपसम्पन्ना रत्नसिंहासनस्थिता रत्नमाल्यां वरदा रत्नगन्धा सेवना राजहंससमारूढा ब्रह्माण्डशबलीश्वरा रमणीय योगाधारा राजिता चिरभूतला गुरुचरणो परिग्रहणा रतिनी रत्नमालिका योगेशी रोगशमनी रामिणी रोगहर्षिणी रामचन्द्रोपराध्यान्ता रावणस्मितकारिणी रत्नवस्त्र परिच्छिन्ना दत्ता रत्नभूषणा यज्ञाति देवता लोका ललिता किंजराहिणी लक्ष्मी लोका दुर्गतिशा लोकिनी लोकविश्रुता सत्या मंगोदरी देवी शरणा लोकदायिनी वरदा मंदिरा विद्या वैष्णवी विमला कृति वाराही विरजा वर्षा वरलक्ष्मी विलासिनी विलसा व्योम मध्यस्था वारिजा धनसंस्थिता वारुणी वेणु संभूता विधिरोक्ता विरूपणी वायुमंडल मध्यस्था विश्वरूपा विरिक्रिया विष्णुपति विष्णुमति श्यामाक्षी वसुंधरा वामदेव प्रिया वेदा वैष्णवी वसुरोहिणी वेदाक्षरपतिकांगी कविकांगी वारदेय सरस्वता वासवी वामजननी वैकुंठ निलयावरा
व्यासप्रिया वर्मदा वाल्मीकि परिसेविता शाकंभरी शिवा शांता शारदा शरणागती शांतोदरी शिवाचारा संपादरिमार्जिनी शोभावती शिवाकारा शंकरार्थ शरीरे शोणाशुभा नयाशुभा शिरसल्लानकारिणी शरावती शरानंदा शरज्योत्सा शुभानना शरवाशोदिनी शुद्ध शबरी सुवाहना श्रीमती श्रीधरानंदा श्रवणानंददायिनी शर्वाणी शबरी वंद्या शर्वाचा षडुप्रिया शर्वादर्शिता देवी षण्मुख प्रियकारिणी षण्गरूप सुमती शिवरातुल नमस्कृता सरस्वती सदाधारा सर्वमंगलकारिणी सामगान प्रिया कूष्मा गायत्री सामसंभवा सर्ववासा सदानंदा दुःखने सागरांबरा सर्वैश्वर्य प्रिया सिद्धि साधुवंदोपदक्षमा सप्तर्षि मंडलजला सोममंडल वासिनी सर्वज्ञा साम्य करुणा समाना विकवर्जिता सर्वोत्तंगा संजयीना सद्गुणा सकलेशवा सरगा सूर्य तनया येशी सोमनोहरी हिरण्यवर्णा हरिणी हरिंगारी हंसवाहिनी सोमवत परितांगी हिराब्दी कन्याक्षमा गायत्री चैव सावित्री पार्वती चैव सरस्वती वेदगर्भा परारोहा श्री गायत्री परांबिका पुण्यदं सर्वपापन्नं महासंपत्तिदायकं गौरी माधवी श्रीमणी माताजी निर्मला देवी नमो नमः. सदा नावासाठी वाव we are having him here. You just now said Gayatri, 1,000 names. And now Renuka Devi incarnate. Gayatri incarnated on this earth as Renuka Devi. And first we had Gayatri mantra. Gayatri's 1,000 names is great for the first time. And this is Renuka Devi, who is called as Yellam also and is one of the most powerful incarnations. श्री गणेशाय नमः. श्री रेणुकाय नमः. गिरा पृष्ठे समासीनं शंकरं लोकशंकरं प्रणतः परिप्रपच्य संशयश्चराननः स्कन्दोवाच तात सर्वे परस्त्वं हि सर्वज्ञ सर्वभावनः कथयस्व प्रसादेन रहस्यं संसारम् विजयसङ्कटे घोरे निर्विघ्नं वरमुत्तमम् अन्येऽपि वाञ्छितार्थाश्च सिद्धन्त्यासु विनाशिनो शंकरोवाच साधुष्टं महाबाहो संशयो मासुमासुते यदनुष्ठानमात्रेण सर्वकामान् वाप्ते कस्यचिन्न यदाख्यातं तद्रहस्यं वदाम्यहं स्तोत्रं सहस्रनामाख्यं निरङ्कार्यसिद्धिदम् सत्यं सत्यकामस्त्वं शृणु षण्मुख भक्तितः सर्वे देवाश्च वेदाश्च क्षीणविद्या युगे युगे अक्षिणप्रदातेयं त्रिसत्यं ममवाचितं सर्वदेवमयी देवी रेणुका कामराधिका पुरासारे मया ख्याता तथैव धर्माचने विष्णुना सागरोन्माते ब्रह्मणा सुरभिकर्मणि गोत्रभेदे भगवतां
सती धारणेन कामेन संवरोधे प्रत्यागतप्राप्तये पुनः गणाधीशेन सततं विघ्नवारण कर्मणि किंवत् भौमोक्तेन शैवत्यामदाज्ञया ख्याता सर्वार्थदासाय सर्वलोकैकमश्रया महत्कार्योजतये अन्ये लोके स्थिता शिवं धर्मार्थकाम मोक्षार्थं अवान् मनसगोचरा तस्याएव प्रसादार्थं सौम्ये नामोदेशः ऋष्यादिकं च संक्षेपात् कथयामि शरामनो ब्रह्मकश्च ऋषिः लोको अनुष्ठुप्छन्दः प्रकृतम् एकमेव महामाया रेणुका दैवतं सुखं सर्वपापक्षयद्वारा नित्यै देव्या मुहुर्मुहुः सर्वाभीष्टफलप्राप्तौ विधियोगस्समारुतः रेणुका राममातेति महापूर्णनिवासिनी एकवीरा कालरात्रि एकला नामोदिश्रमा अनुष्ठानि करण्यासौ उदयादि शरण्यनम् नमो प्रणवादि विराजते अस्य श्री रेणुका सहस्रनाम तस्य ब्रह्मकर्षि श्री रेणुका देवता अनुसंधा सर्व पापक्षयद्वारा जगन्मा रेणुका देवी स्वरूपिणी माता निर्मला देवी विद्यादेवी सर्वाभीष्ट फल भाग्यर्थ जपे विनियोगः ओम रेणुकाय नमः दुर्गाभ्यां नमः ओम राममाते नमः कृष्णदेव्यां नमः ओम महापूर्णनिवासिने मध्यभाभ्यां नमः ओम एकवीराय अनामिकाभ्यां नमः ओम कालरात्रे नमः त्रिशिकाभ्यां नमः ओम एकलाय नमः करदत्ताभ्यां नमः ओम राममाते नमः शिरसे ओम नमः महापूर्णनिवासिने नमः शिखाय नमः ओम एकवीराय नमः कवचाय ओम कालरात्रे नमः नेत्रत्रयाय मोक्षः ओम एककाले नमः हस्ताय पट अतध्यानम् न्याये नित्यं पूर्वम् सर्वदलितां गन्धर्वलावण्यतां देवीं देवगणैरुपासजनां कारुण्यरत्नाकरां लीलाविग्रहिणीं विराजितनुजां सच्चन्ददासावे भक्तानन्दविदायिनी प्रमुदितां नित्योत्सवां रेणुका रामजननी जमदग्निप्रिया सती एकवीरा महामाया कालरात्रि शिवात्मिका महामोहा महाकीर्ति सिद्धविद्या सरस्वती योगिनी चंद्रिका सिद्धा सिद्धलक्ष्मी शिवप्रिया कामदा कामजननी मातृका मंत्रसिद्धिरा मंत्रसिद्धिर्महालक्ष्मीर् मातृमण्डलवल्लभा चंडिका चंद्रकान्ति सूर्यकान्ति शुचिस्मिता योगेश्वरी योगनिद्रा योगदात्री प्रभावती अनाद्यंत स्वरूपा श्री क्रोधरूपा महागति मनश्रुति स्मृतिर्ध्यान चक्षुष अग्र प्रसन्ना मातृका सती रुद्रोषा चंडहासा महापरा महावीरा महाशूरा महाजाभारतस्थिता वैरभिभद्र प्रिया कन्नी वैरभिभद्रा हितोर्भुजा नादप्रिया नादरुद्रा दक्षिणा मृतजीवनी अमृता मृतपानेष्टा सिन्धुवा पात्रशालिनी चंद्रहासुरा विराट भगवानी योगरा पात्रकरा वरदा वरवर्णी मूर्ति वेद जननी वेद विद्या तपोधिनी तपोयुक्ता तपोलक्ष्मी तपसस्थितिदाता ललिता सात्विकी शांता रजसी रसरंतिका एकला रेणुकनया कामाक्षी सत्परायणा ऐन्द्री माहेश्वरी ब्राह्मी वैष्णवी बड़वानना बहुवेदी धनदा ज्ञाम्या अग्नेयी वायु तनदिशा ईशानी नैऋति सौम्या माहेन्द्री वर्षावणी समा सर्वर्षि देजना नवाना नवल्लभा विधिवेशधराभिधि बर्बरा धनमतिका श्रुतिवादन सुरता गुंजाहार विभूषणा मयूरवीक्षा भरणा रामा नीलांबरा शिवा कालिका रेणुदुरिता शिव पूजा प्रियंवरा पृथ्वी नारदेया संसार कारणींद्राक्षी लक्ष्मी चंद्रशेखरा रूपा नमो नमो सुषुप्ति जागृति निद्रा स्वप्ना सूर्यादि चक्रिणी तारा मंदोदरी सीता अहल्या अरुंधति भारती भागीरथी कावेरी गौतमी नर्मदा मयी शेलु गौतमी भीमा त्रिवेणी गंडकी मानसं चंद्रभागा शिव रेवा नंदावेदिका हरिद्वारं माधुपुरं तथात्रेयद्वारं
पुंडलिक धाम सांगितलं ना, इथे चंद्रभागा आहे ना, म्हणून त्याचं वर्णन बरोबर सरस्वती चालन चंद्रभागेचं. हरिद्वारं मातृगुणं दत्ता देयत्वा प्रभु मातृस्थानानि संस्था मातृमण्डलमण्डिता मातृमण्डलसम्पूज्या मातृमण्डलमध्यगा नानाप्राणोत्तराध्या नानाकालचरित्रकुरु कमला ध्वजाब्जे कोल्हापुरनिवासिनी मंदाकिनी भोगवती दत्ता श्रेयानुसूयता षट्चक्रदेवता पिङ्गा यमरण्येश्वरा प्रभु विराख्या सुषुम्नाख्या चंद्रसूर्य समाख्याता सर्वस्त्री नियलाधि समस्त विद्या तत्वज्ञा सर्वरूपा सुखाश्रया पुण्य पापेश्वरी कीर्ति श्री प्रवर्तनी श्यामलग्नस्य जननी कविशक्ति कवित्वदा ह्रीङ्काराम्बा तमोरूपा ह्रीङ्कारा कामदायिनी वाक्प्रलयङ्कार रूपाच मुक्ति ओंकार रूपिणी ह्रीङ्कारा खिलदानोक्ता सर्वविद्यापिता प्रभु जमदग्नि शिवाङ्कर्ता धर्मार्थ काममोक्षदा जमदग्नि क्रोधहरा जमदग्नि धर्मार्थ मोक्षदा जमदग्नि शिवाङ्कर्ता धर्मार्थ काममोक्षदा जमदग्नि क्रोधहरा जमदग्नि विषक्तरी जमदग्नि तमोहन्त्री जमदग्नि सुखैकभूः शीतवीरा विजयमता वीरभू वीरदेविता वीरदीक्षा कलीशौर्य दीक्षिता सर्वमङ्गला कात्यायनी परिवारा कालकाला कलामिनी सर्वसिद्धि कला पूरा सूरत्न विनाशिनी साकारा निराकारा अंकारा कामापुरी समन्ता निजमन्नीश निशान्त्री शासना व्यालाभरण समृद्धा व्यालमञ्जनरञ्जिता अनुरूपा परानुज्य सद्रूपा च महापरा रस्वारस्वरा दीर्घा दीर्घा परात्परा अद्वयाद्वयरूपा च प्रपञ्चरहिता मृदु स्थूलसूक्ष्मा निवेहा च स्नेहाय विवर्धिता ब्रह्मसुता महानिद्रा योगनिद्रा नरेसुता हिरण्यगर्भरूपा च परब्रह्मस्वरूपा ब्रह्मशक्तिर्ब्रह्मविद्या विश्वविद्या निरञ्जना सूर्या कर्मरूपा च श्यामला परिगायिका नारायणी विष्णुशक्ति अमाङ्गमनसगोचरा दुर्गमारी पुण्यकरी पुण्यशक्ति अमाङ्गमाम्बिका रक्तबीजवधूतीर्था रक्तचन्दनचर्चिता सुरक्तपुष्पाभरणा रक्तसंस्थापयप्रदा तीक्ष्णरक्तनकारक्ता निशम्भप्राणसञ्जनी शुम्भप्राणनियन्त्री महामृत्युविनाशिनी सर्वदेव महाशक्तिर् महालक्ष्मी सुरस्तुता अष्टादशभुजाख्यामुषा दशतो गन्धमण्डिता विष्णवाष्टभुजा धात्री कल्पानीता मनोहरा कल्पनारहिता मुख्याज्ञा दारिद्र्यवनदायिनी कौस्तुभा पारिजाता च आहारी रूपधारिणी तिलोत्तमा अप्सरोरूपा नवनाथस्वरूपिणी श्रीरूपा समाधिस्था सत्त्वा खड्गरूपा शवन्तिता महिषासुरदत्तान्विनी सिंहदा सिंहगामिनी त्रिशूलधारिणी प्रौढा बाला मोदासुधर्मिणी शङ्खभृत् चक्रभृत् आशा गदाभृत् आगमण्डिता नागशक्ति कृपासिन्धु मुरारी वरवाहना गणराज महाशक्ति शिवशक्ति शिवसुधा हरिप्रिया रासदेवी गदानां गुरुरूपिणी गोप्रीता गणेशप्रीता कामप्रीता पुरस्कृता सर्वार्थदायिनी रौद्री वेदा विधातिरूपा श्यामनाचितघण्टाक्षु विश्वयोनिरन्तरं श्रावणेश्वरहन्तेश संसारभ्रमनाशिनी संसारफलसम्पन्ना संसारमतिविच्छेदा उच्चासनसमारूढा विमानवर्गामिनी विमानस्त्राविनाशग्नि कालचक्री कालनाशिनी कालचक्रभवक्रान्ता कालचक्रप्रवर्तिनी चेतना चापिनी पौम्या पौम्या पौर्विनाशिनी सिंहासनसुभाभिष्टा सागरकन्यका मणिकन्या क्षेमकरी मुद्रीशावमुचिता श्रुतिज्ञा च पुराणज्ञा स्मृतिज्ञा वेदवादिनी वेदवेदा तत्त्वज्ञा सिंगुरा कालशालिनी इतिहासाविद्धर्मा ध्येया हन्त्री शिशुप्रिया सन्निधा सन्निधावशु वनस्था पार्वती शिवा मेघा मैना कवगिनी सुरभिर्जलमुत्तरी
सर्वभूते सर्वबीजां सरस्थात्री सकला धर्मदेवता सरस्वरा जलस्थानस्य परस्ता वनदेवता क्षयहन्त्री निहन्त्री च निराशङ्का वरप्रिया त्रिकालज्ञाते रूपा च गीता विग्रहधारिणी समाधि पुण्यरी पुण्या पापाज्ञाना विनाशिनी दृश्या तु विषया दृष्टि पापान्त्री क्षमास्तिका विरसारकनिष्ठा च वरुकरसंस्थिता मरुकैटवहन्त्री च सर्वदैव शरीरवृत् त्रिपुरा पुण्यकीर्ति च लोकवश्य प्रदायिनी सांख्यविद्या त्रयीविद्या योगविद्या हरिस्थिता सावरा जंगमा शांति परिप्रिया महिषासुर निर्नाशी दैत्य सैन्य प्राण कटक दमशमरु दामुका वीरश्री जनदेवता उत्कृष्टोत्कृष्ट मर्यादा क्षीरसागर शायिनी वीर लक्ष्मी वीरकांता शिवदूती सनातनी चक्रादि संस्कारुता चंद्रमुंडल विनाशिनी पंचवक्त्रैक रूपाशिव श्रीलेखा परिमोहिनी धूम्रलोचन निर्नाशा अहंकारो दारवाशिनी एकमूर्ति त्रिधामूर्ति त्रिलोकानंददायिनी भवानी दशमूर्तिश्च पंचमूर्ति जयंतिका दक्षिणामूर्ति अनेका दशाकृतिः एक दक्षिणाक्षी विश्वाक्षी विश्वपालिनी चतुर्विंशति तत्वज्ञा चतुर्विंशति तत्वज्ञ सोहम हंसा विशेषज्ञा निर्देशा निराकृतिः यमघंटा अमृतकला जयघंटा जयध्वनि पाठजन्य पुरस्पुरत् शक्तिर् हनुमत् शक्तिरास्तिका शीला करुण शक्ति च रामशक्तिर्विराट तनुः लंका प्रज्वलना वेदा सागर क्रमक्रम नरनारायण प्रीज लोकनीते लौकक विपाशा पाशहस्ता च विश्वबाहो त्रिलिंगिका राशि सतीजी विदिशा दक्षिणा दक्षकन्यका शिवलिंग प्रतिष्ठात्री शिवलिंग प्रतिष्ठिता अज्ञाननाशिनी बुद्धि सर्वविद्या सुवेदना प्रकाशा स्वप्रकाशा स्वयात्वैवर्जिता असद्रूपान् सद्रूपा सत्सद्रूपशालिनी कैलासनिलया गौरी वृषभा वृषवाहना सोमसूर्याग्निनयना सोमसूर्याग्नि विग्रहा विषमेकन दुर्धर्षा लंका दाहनरी इति वैकुंठ विगतमूर्ति वैकुंठ निनयानिला नमो मूर्ति समो मूर्ति तेजो मूर्ति अमेधि सूर्य मूर्ति चंद्र मूर्ति सूर्यमूर्ति चंद्रमूर्ति यजमान शरीरिणी आप्य मूर्ति इला मूर्ति नर नारायण स्तुति विषया ज्ञान विनाश दया ज्ञान मुक्ति सुख विद सुखिनी सौख्य वेग वेदांत पारा स्रोत सुवाज वसोधारा याग शक्तिर शक्तिरुद्र यज्ञ प्राकृति यज्ञ यज्ञ राग विवर्धिनी यज्ञ भक्ति यज्ञ भागा सौभाग्य वरदायिनी व्यापिनी दक्षिषा दशदिक्पाहुर दिगंता बलिदायिनी रूपा विश्वेश्वरी स्कंदा यथाची कामदेवता कामाचार प्रिया कामा कामाचार परायणा इत्यसार वेद विद्यासु वैद्यमाता महोदय दत्तीका शिखराणा कलादिका मेघशक्तिर्महावृद्धि सूर्यकी कुशलमला रुद्राणी रुद्रवदना रुद्रमुख्यान्नभूमिका अन्नदान रसान्नादा तुलसिका भोजनप्रिया कर्मपाकं प्रदापन्ति पाकशक्ति कटिक्रिया सुपक्व प्रदा वाञ्छा वाञ्छादि कमलप्रदा सर्वयन्त्रमयी पूर्णा सर्वभूताज्ञात्मिका ब्राह्मणी ब्रह्मशक्ति चराचर विवाहिनी चराचर निर्देश्री लक्षावशेश्वरावृत भूशक्तिर्गणे शक्तिर् नारसिंही सर्वमाभोक्तरीया च सर्वसर्वाङ्गभूषणा वाराही च सहस्राक्षी रूपशक्ति शुभामया शेषरूपा शेषशक्ति शेषपर्यन्तशायिनी वराह संसंसर्वरिणी कामनी काममोहिनी मायिनी चित्तसदना कामी कामप्रवर्धनी सर्वलक्षण संपूर्णा सर्वदा सर्वालक्षणनाशिनी नागरूपा बिंदुरूपा श्रुति कर्म परंपरा ध्रुवशक्ति ध्रुवारोहा ध्रुवारोहा ध्रुवारोहा
ध्रुवाकारा अग्निहोत्राध्या ध्रुवाकारा ध्रुवस्थितिः ध्रुवा ध्रुवमयी द्रव्या ध्रुवानन्दरूपिणी ध्रुवा वदना कृष्णा नीलग्रीवा कुरीहरा पवित्रदृष्टि पावित्र्य कारिणी ऋषिवत्सला शिशुसंगधरा संगा संगराग प्रवर्धिनी निस्संगा संगभंगा चतुराश्रमवासिनी चतुर्वर्ण परिष्पंगा चतुर्वर्ण परिष्ठिता निराश्रया राघवती राहिमान सकलश्रया ब्राह्मणी राजदुहिता वैश्या शूद्रा परात्परा गृहाश्रम समासीना गृहधर्म निरूपिणी गृहधर्मानुशारणी ब्रह्मचर्य सेविणी वानप्रस्थाश्रमस्था च यदि धर्मा सुरत्तनो समुत्थिति प्रलया कृति सर्ग नित्यन्तरे क्षीरक ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति छायाशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति छायाशक्ति पूर्वक नानावाद विशेषज्ञ नानावाद निरंजता शून्यवाद निराकार धर्मवाद निरूपिणी नवचंडी क्रिया हेतु संकल्पा कर्मका कल्पनादिगा निर्विकल्पा विकल्पाद्या संकल्पा कल्पपूर्वा सृष्टिग्नीच स्थितिग्नीच विनाशंडी त्रिभुवभूत अयोध्या द्वारका काशी मथुरा कांचवतिका विशोका शोकमार्तंडी पांचाली शोकनाशिनी यम नियम शक्ति धर्म शक्ति प्रदा मुक्ति कुंडलिनी भोक्ति विषदृष्टि समेक्षणा कृपेक्षणा कृपाधांगी कृपा चिंता कृपा श्रुति महापुरादि निलया महापूर कृत स्थिति अज्ञान कल्पनानंता प्रपंच करुणादिगा साम्य दृष्टि देह पुष्टि कृत दृष्टि उदाखिला वेद पुण्य परिपाका Take only of the feet because this is the time, because he is the virgin, so the virgin doesn't wear all the alankaras. So these feet we have not taken photographs before, so they are one speciality. Kumarika, बरोबर वाटते. महापूर सुखासीना डमरू डमरू गर्पिता महापूर महादेवी डमरू प्रीति बलिता भद्रकाली पितृशक्ति मानसा भुवनेश्वरी गायत्री चतुर्वक्त्रा त्रिपुरा वीरवंदिता यमांबा विनुनानंदा कैवल्य पददायिनी बड़वा सदया भूता शास्त्र सर्ग प्रवर्तिनी ऐन्द्रादि देव जननी एरांबा कूल रूपिणी कुंभदर्प हरातोला दोला क्रीडन लालसा दर्प कुंभदर्प हरा दोला दोला क्रीडन लालसा शीतला विष्णु माया च चतुर्वक्त्र नमस्कृता मातंगी विष्णु जननी प्रेता सन्निवासिनी मरुत्मत गमनना नीला ब्रह्मात्रा ब्रह्मघोषिता नीला 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 सिद्धि पाशुपत्राज नीलेंदी वरलोचना रुक्मा शंकर जननी कर्मनाशा च शांभवी श्रीगा वामन शक्तिश्च हिरण्य गर्भभूषरा वाग्वादिनी च वर्णा च शंकरार्ध शरीरेणी मोहरात्रिश्च भ्रमादि गणरूपिणी दीपिका क्रीडवरदा मोहिनी गर्वाशना कपर्दा चित सर्वांगी कपर्दा भरप्रिया सावित्री भैरवी विघ्ना पीता पीतांबर प्रभु दशवक्त्रा नवद्यांगी शिशंदोचरभूषिता दशांग्री दशदूर्गंडा स्फुरद्रष्टा विभीषणा कर्पूरद जीवदना नीलबाहुरुत्तमा ब्राह्मगेया मुनिध्यया ह्रींकारा कामविग्रहा षड्बीजा नवबीजा च नवाक्षरतनुखा दशाना द्वादशानाध्या षोडशाना विबीजगा माला मंत्रमयी जया सर्वबीजैक देवता जप माला च जयदा जप विघ्न विनाशिनी जप कर्त्री जप स्तोत्रा मंत्र यंत्र फलप्रदा मंत्रावरण रूपैका यंत्रावरण देवता पद्मिनी पद्मपत्राक्षी शमयज्ञान देवता यज्ञ सिद्धि सहस्राक्षी सहस्राक्ष पदप्रदा रेणुका रेणुवंशावताराढ्या महिषांतरी समेत ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा त्रयीपरा अभिचार क्रिया सर्वा पंचतंत्रादि देवता अभिचार क्रिया शांति शांति मंत्रादि देवता अभिचारोपशमनी
सर्वानंद विधायिनी अथर्व पाठ संपन्ना लेखनी लेखकर्तिता भूमलेख्या वर्णशक्ती सर्वशक्ती प्रसिद्धिदा कीर्ति कामा कला कामा कामाक्षी सर्वमंगला शूलेश्वरी कुशुलग्नि चिंता शोकविनाशिनी चिंतादिदेवता भूतनायका नलकूबरी कराल्य ऊर्ध्वकेशी च श्रीधरी च विनायकी कामेश्वरी च कौबेरी पद्मावत्य विराजते द्वारामुखी च कौबेरी विजया मेघवाहा महाबला महोत्साह महाभय निवारिणी कामिनी शांकरी काष्ठा सहस्रभुजनिग्रह प्रमा प्रभाकरी भाषा सप्ता स्वर संस्थिता अलसा पुरसंस्थाना मुरानी विद्यनिश्चला हिमाचल सुक्रीड़ा पीड़ा पाप निवारिणी अर्धमात्राक्षरा संध्या त्रिमात्रा भारती धृति वेद माता वेदगर्भा कौशिकी त्र्यंबका स्वरा अंबालिका सुधाकृष्णा धूम्रा रघुनाथुरजया आता देवीचं पण 108 आहे ना सगळं 108 देवीचे आपले. हॅव यू गॉट दोज 108 विथ यू नवीन? हां देन कॅन यू कम हियर? त्यांना करू द्या 108 या कम त्या पुस्तक गोळा पुस्तक करून देतात निघाली का गणपती निघाला घाला त्याला काय झालं गणपती त्यावेळी प्रत्येक वेळा मागच्या वेळेला दिलं ते शोधून काय करतो चालतो तो सगळ्या सेंटरला दिसतात आपण करूया ते म्हणून या बरोबर श्री माता श्री महारथी देवी कार्या समुद्यथा आकुला नित्या भावानी विष्णु ग्रंथि विवेदिनी भक्ति क्रिया भक्ति गम्या निर्लेपा शर्मदायिनी निराधना निरंजना महापताकनाशिनी निर्मला निरहंकरा निष्कलंका निराकरा निराकुला निर्विकरा निर्गुणा निरुपप्लवा निष्कला निष्कमा नित्यमुक्ता लीला विनोदिनी निराश्रया निरंतरा निष्कारणा निरूपणी निरीश्वरा निरागा निर्मदा निस्तुला गंभीरा निश्चिंता निर्मोहा निर्ममा निष्पब्बा निसंशया निर्भवा निरबद्धा निर्विकल्पा निष्पविग्रहा निर्नाशा निरफया निष्क्रिया निरचित्पुरा निरत्यया महामया विजया संग्रकारुणा महाशक्ति भगवती सुखप्रदा परमासना लोकातीता महारथी विश्वरूपा रक्षाकरी रक्षसाग्नि पराशक्ति योगदा परमेश्वरी पुण्यलभ्या सुखगद्या अचिंत्य रूपकारिणी आदिशक्ति गुरुमूर्ति शोकनासुरागति चंडिका त्रिगुणात्मिका महती प्रणरूपिणी शुभकरी समात्मिका सच्चिदानंदरूपिणी वीरमथा कर्पिता परमणु क्षिप्रप्रसादिनी सदाशिवा विश्वाकर्ता स्वभव मधुरा पुष्टि धीरा समर्चिता नित्ययौवाना विश्वसाक्षिणी विश्वग्रसा सुधाश्रुति शश्वती परमोदरा धर्मदरा स्वस्ता पशहंत्री श्रीपवनाकृति चंद्रनिधा राधिकृत्या महापूज्या शक्ति लज्जा विमला भारदा महादेवी विलासिनी वंदरूजा वत्सला सहजयोगदायिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
Usta Sanga. Usta, say those Nirmalas, this thing that you made. See, त्याच्या तोंडाला धरा तुम्ही. Om Shri Nirmala Tita Nirmala Mata Nirmala Rupini Nirmala Vatara Nirmala Kama Nirmala Tattva Nirmala Kirti Nirmala Karayani Nirmala Mukha Nirmala Bhaskari Nirmala Prakasha Nirmala Jyoti Nirmala Prasada Nirmala Kari Nirmala Shraddha Nirmala Vishuddhi Nirmala Hridaya Nirmala Chandra Nirmala Kshu Nirmala Hasta Nirmala Pada Nirmala Pada Nirmala Asa Nirmala Nge Nirmala Nanda Nirmala Ishwari Nirmala Langa Nirmala Nanda Ratri Nirmala Nanda Tattva Nirmala Nanda Rasa Nirmala Leela Nirmala Nanda Artha Nirmala Tirtha Nirmala Yatra Nirmala Ini Nirmala Nirmatri Maha Nirmala Parama Nirmala Nirmala Uttama Nirmala Nirmalatma Nirmala Swantita Nirmala Guru Nirmala Gauri Nirmala Ganeshi Nirmala Ganeshwari Nirmala Srishti Nirmala Palini Nirmala Dhatri Nirmala Shakti Katri Nirmala Vidya Nirmala Vaidya Nirmala Surya Nirmala Suri Nirmala Savitri Nirmala Akshini Nirmala Bhadra Nirmala Rupaini Nirmala Vruthan Nirmala Pami Nirmala Sundara Nirmala Shri Nirmala Keshi Nirmala Lakshmi Nirmala Sita Nirmala Vaishnavi Nirmala Yama Nirmala Dhani Nirmala Radha Nirmala Isha Nirmala Durga Nirmala Chamunda Nirmala Brahmachari Nirmala Ratri Nirmala Raksha Nirmala Raktini Nirmala Kali Nirmala Bhairavi Nirmala Veera Nirmala Saraswati Nirmala Brahmi Nirmala Chi Nirmala Jvala Nirmala Viswalingini Nirmala Dikta Nirmala Lingini Nirmala Anda Nirmala Sarjini Nirmala Tvika Nirmala Vahana Nirmala Vahini Nirmala Sastra Nirmala Mukta Nirmala Kyuda Nirmala Shekhara Nirmala Kirti Nirmala Vaibhava Nirmala Vaibhavani Nirmala Prabhuta Nirmala Prabhavini Nirmala Supraja Nirmala Suprajani Nirmala Yoni Nirmala Dharva Nirmala Bhumi Nirmala Utbhavi Nirmala Prithvi Nirmala Sagara Nirmala Gamya Nirmala Sutta Nirmala Puja Nirmala Radhya Nirmala Vandya Nirmala Yogi Nirmala Yogeshwari Nirmala Mochayini Nirmala Mukta Nirmala Moksha Nirmala Prema Nirmala Karuna Nirmala Daya Nirmala Kshama Nirmala Shakti Nirmala Kristi Nirmala Sauvagya Nirmala Sumangani Nirmala Sandarya Nirmala Mata
Adi Mata Paramamata Matrakini Nirmalakini Nirmala Shaila Nirmala Shaila Putri Nirmala Darshini Nirmala Drishti Nirmala Shruti Nirmala Smriti Nirmala Sana Nirmala Ganda Nirmala Mridavi Nirmala Madhavi Nirmala Yajna Nirmala Putri Nirmala Yadika Nirmala Sri Nirmala Vacha Nirmala Vagishwari Nirmala Mantra Nirmala Mantrani Nirmala Akshara Nirmala Shabdeshwari Nirmala Kara, Nirmala Parvati, Nirmala Sati, Nirmala Aimarati, Nirmala Jnana, Nirmala Shvasa, Nirmala Prana, Nirmala Manasa, Nirmala Chitta, Nirmala Icha, Nirmala Chaitanya, Nirmala Tha, Nirmala Megha, Nirmala Prakriti, Nirmala Devi, Nirmala Deva, Nirmala Mula, Nirmala Bhuta, Nirmala Vibhuta, Nirmala Shobha, Nirmala Mama, Nirmala Bhavana, Nirmala Dhyana, Nirmala Gita, Nirmala Pujita, Nirmala Karma, Nirmala Vrtha, Nirmala Chavana, Nirmala Yana, Nirmala Shrama, Nirmala Sharanam, Nirmala Vrinda, Nirmala Buddhi, Nirmala Siddhi, Nirmala Riddhi, Nirmala Niti, Nirmala Priti, Nirmala Kshi, Nirmala Rasi, Nirmala Kavya, Nirmala Kula, Nirmala Kumbha, Nirmala Mala, Sunirmala, Nirmala Pushpas, Nirmala Deepa, Nirmala Dhupa, Swanirmala, Nirmala Indri, Nirmala Putri, Nirmala Bodhi, Nirmala Talini, Nirmala Ragini, Nirmala Budhaini, Nirmala Jnanaini, Nirmala Rakta Patra, Nirmala Rakta Rupini, Nirmala Rakta Swamini, Nirmala Rakta Kalini, Nirmala Rakshakarini, Nirmala Suraksha Rupini, Nirmala Tamasahantri, Nirmala Tamasupari, Nirmala Shubhangini, Nirmala Shubhangini, Nirmala Kshamarupini, Nirmala Mokshadharini, Nirmala Moksha Pradayini, Nirmala Moksha Vartayini. Puja sun baik. Udah. Nirmala Moksha Tattva, Nirmala Moksha Sega. पाठ इतिहास गया अति मुख्य Nirmala Vishweshwari, Nirmala Vishwati Vaishwari, Nirmala Vishwakarini, Nirmala Vishwakarini, Nirmala Vishwakalini, Nirmala Vishwamokshani, Nirmala Vishwasanharini, Nirmala Vishwavahi, Nirmala Shakti Vahini, Nirmala Shakti Rupini, Nirmala Shakti Mahesha, Nirmala Shakti Vijeshwari, Nirmala Sarva Rupini, Nirmala Budhaini, Nirmala Purna Gyanyam, Nirmala Satishwari, Nirmala Sattvadharini, Nirmala Satyabharini, Nirmala Satyakarini, Nirmala Satyakevala, Nirmala Sahajayini, Nirmala Shishireshwari, Nirmala Shitala Rupini, Nirmala Satyameshwari, Nirmala Sattvakarini, Nirmala Satya Rupini, Nirmala Sushileshwari, Nirmala Himadrishwari, Nirmala Himeshwari, Nirmala Sadashivadhangini, Nirmala Lavri, Nirmala Shuddha Haimavati, Nirmala Vasini, Nirmala Hima Kshetrantrasta, Nirmala Nitya Himangini, Nirmala Parahima Vasini, Nirmala Parameshwareshwari, Nirmala Parama, Nirmala Nitya, Nirmala Amshri, Nirmala Nityananda, Nirmala Nityananda, Nirmala Nitya Chaitanya, Nirmala Nitya Chitta Svara, Nirmala Nitya Vainulya, Nirmala Nitya Nairmalya, Parama Nairmalya Vasini, Nitya Nairmalya Vasini, Parama Nairmalya Vasini, Nirmalati Parameshwari, Sahaja Yoga, Nirmalya, Sahaja Yoga Dharayini, Nirmala Sadashiveshwari, Parama Brahma Swarupini, Parama Brahmantara Namaste Nirmaleshwari, Sahaja Shakti Bhagavati Mataji, Nirmala Devi, Namo Namah. Nirmala Shaila Putri, Nirmala Brahmacharini, Nirmala Chandra Gandha, Nirmala Kushmanda, Nirmala Skanda Mata, Nirmala Katyayini, Nirmala Kala Ratri, Nirmala Mahagavri, Nirmala Siddhi Ratri, Navadurga Shri Nirmala,
साक्षात श्री आदिशक्ति भगवती माताजी श्री नर्मला देवी नमो नमः। सर्वांनी थोडं थोडं बोलू या आंबे बिंबे आणले ना ते घ्या आंबे आंबे आवळे मेवा Hello. Shri Chaturasto Brahmadevo Adideva Prajapati Hansavano Shabdeshwaro Mayura Kupatana Veda Pita Veda Matraga Shabda Brahma Parameshwara Chaturmukho Guruveshwaro Mahadaksha Prajapati Janako Janakeshwara Sarva Bhuta Vamaicha Adi Saji Devesho Adi Kati Adi Kriya Sarvagraha Swamitam Tvam Buddha Buddha Saraswati Kalavan Kaleshwaro Kalatma Kriyatmacha Buddhatma Shabdatma Vagatma Vageshwara Sat Pratyatma Vedatma Dhyanatma Gravatma Cha Shishyatma Shatvatma Shrutyatma Narayeshwara Adyankara Purvankara Pratamankara Pratama Rajovan Radatma Radeshwara Rameshwara Ramatma Adnyatma Sarva Mahabhutatma Cha Sarvatama Pratmatvam Namaste Paramatmane Koti Koti Senapati Brahmadeva Shri Prajapati Koti Koti Ashwapati Brahmadeva Shri Prajapati Shashtanga Shashtrakuta Shashteshwara Shashtaka Bhava Maya Nala Bijatmatvam Vishwaretasa Padma Yuni Prajapatmi Vishnavasana Vishwaja Vishnu Navyatmacha Vishnu Vaishnavevacha Sarva Jagat Karta Cha Vishwa Yoni Brahmanaja Brahmano Brahmana Priya Brahmana Brahmaneshwara Sarva Veda Dharo Cha Sarva Veda Videkapa Sarva Kalagnya Sarva Kalam Meyatma Satya Sanvibhata Mahavibhajayi Atmanor Vibhajayi Vibhajanatma Parameshwara Sarva Kala Vignayi Sarva Kala Vedayi Pramanatma Parit Mityatma Sukshma Mana Matratma Pramana Guru Shabda Guru Veshwara Bhashya Guru Bhashya Guru Paramatma Guru Veshwara Sarva Apsara Rajeshwara Sarva Deva Dhipadishwara Sarva Swarga Patishwara Adi Pashteshwara Sarva Dharma Matrishwara Dharma Dharo Dharmeshwara Nyaya Dhara Nitya Shabda Mahavaja Loudly this time, nobody's hearing. Nyaya Dhara Nitya Shabda Mahavaja Maharaja Dharma Dhata Vishwaro Sarvasura Dhishapati Raja Dhiraja Bhupala Bhupati Bhukrita Sarvaushadha Dhipati Shudhaushadha Vedayi Shuddha Vidya Shuddha Vaidya Shuddha Jnana Shuddhatmacha
Sushanta Paramarshanta Nitya Shanta Nitya Chari Nitya Shantya Vartayi Shanti Vati Shanti Maya Suswadhisthana Mula Prakrita Sarva Prakrita Parama Prakrita Sarva Kala Vyukya Vedayi Sarva Samayo Ayi Satkala Vartayi Rupama Raja Rupa Raja Raja Gacha Raja Dhulia Hema Go Hema Rupa Hema Tattva Hema Asana Hema Atma Hema Rasa Hema Naro Hemeshwaro Hema Karta Suvarna Suvarna Shobha Suvarna Dita Suvarna Chisu Suvarna Ujvala Suvarna Aksha Suvarna Gru Swarna Aksa Kanaka Hasta Kanaka Vibhutita Suvarnatha Suvarna Mangalya Ati Saubhagyeshwara Suvarna Sumangala Subhadra Saubhagya Dharmakeshwara Kirti Raja Atyavjvala Mahavaibhava Parama Vibhushika Gambhira Gambhira Atmaja Stira Stira Raseshwara Krishyadharo Ati Garvita Garvitatma Garvita Rupa Garvita Tattva Gambhira Mukha Gambhira Atmateshwara Raja Yoga Raja Dhulia Raja Jomukha Mukeshwara Raja Shri Gauravan Rajasa Raja Pingaleshwara Pingaladhara Sarvakarta Sarvasrushta Nirmata Adi Putra Pamaka Pavitra Putita Yajako Antar Yajako Uttara Yajako Parama Yajako Yajakeshwara Tattva Adi Yajaka Namaste Namaneshwara Sakshat Shri Shakti Bhagavati Mataji छान केला झाले निमाचं फोन केला तुम्हाला संक्रांतीची पूजेचं पाठवून निमाचं होतं एवढं प्रेम तिची आठवण केली पाहिजे तिचा म्हणजे काय विचार अमेरिकेपर्यंत घेऊन पोचली साड्या कला कपड़ा तो Om Shri Dharmadhatavishware Namah Om Shri Akashathatavishware Namah Om Shri Tathagateshware Namah Om Shri Akshogeshware Namah Om Shri Laseshware Namah Om Shri Pushpeshware Namah Om Shri Akashathavishware Namah Om Shri Maleshware Namah Om Shri Drupeshware Namah Om Shri Amikaveshware Namah Om Shri Avalokiteshware Namah Om Shri Manjushveshware Namah Om Shri Manjugosheshware Namah Om Shri Vedeshware Namah Om Shri Alokeshware Namah Om Shri Amodhasiteshware Namah Om Shri Vajrapanishware Namah Om Shri Dipanishware हे सगळे बुद्धाची साइड आहे राइट साइड इज इम्पॉर्टंट Om Shri Kundeshware Namah Om Shri Ankusheshware Namah Om Shri Pashadhareshware Namah Om Shri Vajrashrikaleshware Namah Om Shri Kinkini Dharinishware Namah Om Shri Sattvakartavishware Namah Om Shri Dharmarajneshware Namah Om Shri Samantra Bhadrashware Namah Om Shri Prajna Paramniteshware Namah Om Shri Dhatineshware Namah Sakshat Shri Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah
Aditi Aditya Mata Varuneshware Mitreshware Yamuneshware Aryamaneshware Margeshware Daksheshware Savitreshware Sarvaditya Shakishware Nama Sakshat Shri Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah. भक्ति में मंत्र जो कहती हूँ कह दो के पहली लाइन सब कुछ है नहीं सबन दे
तुम्ही आरती करा आणि तुमचे इथल्या लोकांना घ्या आरतीला तुम्ही करा ना तुम्ही हात लावा मला हात लावतो तुम्ही घट्टा घ्या आधी सुरू करू द्या मग पण आधी सुरू करतो ना बरोबर आहे साथ द्या आधी गणपती सबको दुआ दे सबको दुआ देना सबको दुआ देना जय निर्मला माताजी जय निर्मला माताजी जय में सदा रहना सबको दुआ Yeah.
निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय